Today we are going to start revision number 2 of chapter number 1, number system. So in the previous class what we studied, just to recapitulate, थोड़ा पूरा नहीं, just मैं point बता रहा हूँ. हम लोग ये वाला part किए थे और ये वाला किए थे और थोड़े example discuss किए थे इसका. Now we are going to do today rationalization. मैं यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप बताया था, बट मैं अभी इसको एक्सपैंड करने जा रहा हूँ. देयर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, that is simple problem. I will tell you which type of question will come under simple problem, because these are the classification not given in any book. This is my classification, different types of questions. The second is simplification, and the third one is to find the value of a and b, and the fourth one is proof related questions, and the fifth one is to find the value of expressions. Okay, so these are the different types of questions, but before that let us discuss about what is rationalization. और rationalization से पहले we'll revise rationalizing factor. Okay, so rationalizing factor क्या है, देखो, if the product of two irrational number, अगर दो irrational number का product हम लोग को rational number मिलता है, so that means the two irrational numbers are rationalizing factor of each other. So if the product of two irrational numbers is rational, then each one is called the rationalizing factor of the other. For example, see, the product of these two irrational number is a square minus b, which is a rational number. So that means a plus root b, a minus root b are rationalizing factor of each other. So let us see with one example. इसके बाद वाले स्लाइड में एक एग्जांपल दिखलाऊंगा. तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 प्लस रूट 2 क्या होगा? What is the rationalizing factor of 3 plus root 2? 3 minus root 2. Right. 3 minus root 2. 3 minus root 2. What is the rationalizing factor Three of minus root 2. 5 minus 2 root 3? 5 minus 2 root 3. 5 plus Five root plus 2. 5 plus 2 root तो 3. क्या कर रहे हैं हम Plus लोग? 2. केवल प्लस का माइनस कर रहे हैं बीच में और माइनस का प्लस कर रहे हैं. ओके, एंड फॉर rationalizing the denominator, this you have to keep in your mind. For rationalizing the denominator of a number, we multiply its numerator and denominator by its rationalizing factor. हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Okay, the process is called rationalization. The process is called rationalization. Let us see one example. See, 1 upon 3 plus root 3. Just now you told the rationalizing factor is 3 minus root 2. 1 upon 3 plus root 2. The rationalizing factor of 3 plus root 2 is 3 minus root 2. So we have to multiply numerator and denominator by 3 minus root 2. ठीक है, तो 1 से इंटू करना इजी है. चरिता. Now in the denominator, this is in the form of a plus b into a minus b. So that will become a square minus b square. Right? So 3 square 9 हो जाएगा. What is the value of root 2 whole square? 2. 2. So 2. Right. So next step में 3 minus root 2 upon 9 minus 2 हो जाएगा. And the value of 9 minus 2 will become 7. 7 is a rational number. See, denominator जो था, the denominator was 3 plus root 2. Now it becomes rational number. Okay, so this process is called rationalization. Irrational number को rational बनाने के लिए जो process हम लोग use कर रहे हैं, that process is called rationalization. और वो process में क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको rationalizing factor से multiply कर रहे हैं. Okay, now first type of question is simple problem. सिंपल प्रॉब्लम में केवल एक एक्सप्रेशन दे देगा. राइट, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सिंपल प्रॉब्लम में दैट इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सी, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इसको मैं सिंपल, ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सिंपल प्रॉब्लम में कंसीडर कर रहा हूँ. सो व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 8 plus 5 root 2? 8 minus 5 root 2. Okay. Minus 5. 8 minus 5 root 2. So what we will do, we will multiply numerator and denominator by 8 minus 5 root 2. So this step is clear?
Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now Yes, this sir. is in the form of a plus b into a minus b. So 1 से इंटू करना आसान है, तो न्यूमरेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है. So denominator is in the form of a plus b into a minus b. So that will become a square minus b square. That is 8 square minus 5 root 2 whole square. So 8 square is 64. What is the square of 5 root 2? 50. Okay. 5 का स्क्वायर 25 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है. सो 25 इंटू 2 इज 50. सो 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 64 माइनस 50. 64 माइनस 50 फर्दर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा. 14. सो दिस इज द फाइनल आंसर. और सिंप्लीफाई हम लोग इसमें नहीं कर सकते. विल सी वन मोर क्वेश्चन. Rationalize the denominator of root 5 plus root 2. What is the rationalizing factor of this? Root 5 minus root 2. Root 5 minus 2. Right, root 5 minus root 2. So again we are going to multiply numerator and denominator by root 5 minus root 2. Say the numerator is 6 into root 5 minus root 2 and the denominator is in the form of a plus b into a minus b. That will become a square minus b square. So root 5 whole square, what is the value? 5. And what is the value of root 2 whole square? 2. 2. So this will become 5 minus 2. And 5 minus 2 is 3. अभी इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग. 6 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं. So we'll get 2. So final answer 2 into root 5 minus root 2. Okay. Now this is the first category question. Now we are moving towards simplification. So ये simplify वाला question है. Simplification के अंदर में we have to simplify this expression. So how will you simplify? By rationalizing the denominator. So what is the rationalizing factor of 6 plus 4 root 3? 6 minus 4 root 3. Minus 4 root 3. 6 minus 4 root 3 हम लोग क्या करेंगे? Numerator और denominator से multiply करेंगे. This first step is clear? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now the numerator is in the form of a minus b whole square क्योंकि दोनों term same है. And the denominator will be in the form of a plus b into a minus b. So numerator को लिखेंगे 6 minus 4 root 3 whole square. And the denominator is 6 square minus 4 root 3 whole square. Right? So a minus b whole square का formula a square plus b square minus 2ab, or you can use a square minus 2ab plus b square, but I suggest a square plus b square minus 2ab use. a square plus b square minus 2ab, और ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 root 3 का स्क्वायर 48 हो जाएगा. So 36 plus 48 minus, what is the value of this? ये कितना हो जाएगा? 2 into 6 into 4 root 3. minus 36 root 3. 36 कैसे आएगा? 48 root 3. Right, 48 root 3. So next step में 36 plus 48 minus 48 root 3 upon this will be minus 12. Okay, and 36 plus 48 is 84. अब हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम लोग माइनस इंटू करेंगे. इसमें भी माइनस इंटू करेंगे और इसमें भी माइनस इंटू करेंगे. सो ऊपर साइन चेंज हो जाएगा. दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम माइनस, और ये भी प्लस हो जाएगा. वेदर दिस स्टेप इज क्लियर? Yes, sir. If you multiply minus sign, the sign will reverse. Minus will become plus. ये माइनस था, भी प्लस हो गया. This was minus, it will become this was plus and it will become minus. ये भी माइनस था, प्लस हो गया. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों 12 से डिवाइड हो रहा है. सो वी कैन टेक 12 कॉमन. अगर 12 हम लोग कॉमन लेते हैं, सो यहाँ पे बचेगा 4 root 3 और यहाँ बचेगा 7 divided by 12. Now next step, you cancel this 12. So what you will get? 4 root 3. 7. Right. You can do in this way also. ऐसा भी कर सकते हैं. 48 upon 12 split कर देने से. अगर split करते हो तो you will get 48 upon root 48
root 3 upon 12 minus 84 upon 12. In this way also you can do. So ये दोनों कैंसिल करने से 4 मिलेगा और ये दोनों कैंसिल करने से you will get 7. In both way you will get 4 root 3 minus 7. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So now we'll move towards one more simplification type question. Simplify 7 root 3 upon root 10 plus root 3 minus 2 root 5 upon root 6 plus root 5 minus 3 root 2 upon root 15 plus 3 root 2. So what is the rationalizing factor of this one? Root 10 Root minus 10 minus root 3. Okay. What is the rationalizing factor of this one? Root 6 minus 5 root minus 5. root 5. Right. What is the rationalizing factor of this? Root 15 Root minus 15 root minus 3. 16 minus So 3. what we will do, we have three terms. Single term को हम लोग simplify करेंगे. So first we will take this one. We'll multiply it by rationalizing factor. That is root 3 minus root 10 minus root 3. This step is clear? Yes, sir. Okay. Sir. अब ध्यान से देखो 7 root 3 into 10 root 10 minus 7 root 3 into root 3. And the denominator is in the form of a plus b into a minus b. So that will become root a square minus b square. So this is the next step. Again root 3 root 10, ध्यान से देखो दोनों रूट है और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर में. So this will become root 30. And what about this one? This will become 3. 7 into 3, that is 21. Or root 10 whole square, 10. root 3 whole square, 3. 9. 3, right. So we'll get 7 root 30 minus 7 into 3 upon 10 minus 3. Any doubt in this step? No, sir. Okay. No, sir. So यहाँ पे we can take 7 common from these two. और नीचे भी Yes. 7 आ रहा है देखो 10 minus 3. So next step में ये दोनों को हम लोग cancel करेंगे. So finally first term we are getting root 30 minus 3. So this is the first term. Now similarly we will do the second one. Second one का rationalizing factor just now you told that root 6 minus root 5. So multiply divide by root 6 minus root 5. फिर से देख लो इधर 2 root 5 into root 6, 2 root 5 into root 5 minus, in between minus, and this is in the form of a plus b into a minus b. So that will become 2 root 5 into root 6. ये दोनों हो जाएगा root 30 and this 2 will become 5. Okay. So 2 root 30 minus 2 into 5 will become 10 and root 6 whole square will be 6. 6. and root 5 whole square 5. 5. So we'll get this step and this is nothing but this is 1 and the numerator में हम लोग 2 common ले सकते हैं. 2 common लेंगे तो root 30 minus 5 बचेगा. So second term clear है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we are going to simplify the third term. Third term, the rationalizing factor is root 15 minus 3 root 2. Already तुम लोग बताए हो. So फिर से multiply कर रहे हैं 3 root 2 minus 3 root 2 into root 15 minus 3 root 2 into 3 root 2. And the denominator is in the form of a plus b into a minus b. That will become a square minus b square. This step is clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So ये हो जाएगा 3 root 30 and 3 root 2 whole square कितना होगा? 18. 18, right, fine. And root 15 whole square will be 15. So now 15 minus 18 कितना होगा? Minus 3. Minus 3. Right. Minus 3. अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को देखो इसको भी -3 से डिवाइड करेंगे और इसको भी -3 से डिवाइड करेंगे स्प्लिट करके. So ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा and we'll get here 6 plus 6 and here we'll get minus root 30. Whether this is clear, the third term? Sir, can you repeat? Okay. See इधर देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ. 3 root 30 है. If you split, you will get
3 root 30 upon minus 3 and 18 upon minus 3. सो यहाँ पर प्लस माइनस है तो नेगेटिव होगा ये, और ये दोनों माइनस है तो +6 होगा यहाँ पर. Whether this is clear? Yes, sir. So we'll get 6 minus root 30. Okay. Now we are going to carry forward, we are going to substitute all these three term in this one. ध्यान से देखो, इसके जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे √30 minus 3, और इसके जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 2 into √30 minus 5, और इसके जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 6 minus √30. So we are substituting. Any doubt in this step? No, sir. No, sir. Now we have to open this bracket and this bracket. तो ये because of this minus sign, ये वाला प्लस हो जाएगा. This sign will become plus, and because of this minus sign, this will become plus. Right? So यहाँ पे क्या होगा? पूरा bracket open करने के बाद, what you will get here? So 10. Plus 10. Okay? You will get plus 10. क्योंकि ये माइनस साइन की वजह से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस √30 मिलेगा. So this step you will get. Any doubt in this step? No, sir. Okay. No, Now sir. see √30 plus √30 will be 2 times √30, and that will be cancelled with this one. ये clear है? Yes, sir. और सिर्फ क्या बचेगा? Yes, sir. What it will be left? -3 Minus plus 3 10. plus 10 minus 6. Very good. So ये हो जाएगा 10 minus 9. Final answer is 1. Any doubt? No, sir. Okay. No, No, sir. sir. So now simplification हो गया. See, we completed 2 types of questions: simple problem and simplification. Now we are going to do to find A and B. Okay, this is the third type of question. In this question, we will simplify this one. Simplification के लिए क्या करेंगे? We'll rationalize the denominator. So denominator is 4 minus 3 root 5. What is the rationalizing factor of 4 sorry, plus 4 3 minus- root 5. 4 3 minus plus 3 root 5. 4 minus 3 root 5. The denominator is 4 minus 3 root 5. What is the rationalizing factor of 4 minus 3 root 5? 4 plus 3 root 5. 4 plus 3 root 5. Okay. So we'll multiply numerator and denominator by 4 plus 3 root 5. This first step is clear? Yes, sir. Yes, sir. Now this is in the form of same number है. So square हो जाएगा 4 plus 3 root 5 whole square. And the denominator is in the form of a plus b into a minus b. So this will become a square minus b square. So this is the next step. This is also clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. What is the square of 3 root 5? What is the 45. 45. right? 45. And this is 16. So we'll get this step: 16 minus 45 in the denominator, and the numerator is a square plus b square plus 2ab. तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 2 into 4 into 3 root 5. 24 root 5. 24 root 5, sir. 24 root 5. Okay. 24 root 5. So 16 plus 45 plus 24 root 5. And 16 plus 45 is 61. 61. So 61 plus 24 root 5 upon minus 29. Now we will split. दोनों को split कर देंगे. तो split करेंगे तो ये मिलेगा. If this is clear, we will proceed. Clear, sir. Yes, sir. Okay. Now ये इसका simplification था. Now this is equals to a plus root 5. Now we will equate this with a plus root 5. So the value of a is this one. The value of b is this one. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. गंगा शंकर थोड़ा माइक पीछे रख के बोलो, बहुत जोर से सर सुनाई नहीं देता है सर, फिर बोलूंगा तो. ऐसा नहीं है. ओके सर. ठीक है, बहुत awkward लग रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना. Right. Next question. Example. Next example, the same a to find the value of a and b.
हम लोग को क्या करना है? Again, we have to simplify this expression. So in order to simplify, we will rationalize the denominator. So what is the rationalizing factor of root 11 plus root 7? Root 11 minus root 7. ठीक है. So we'll multiply numerator and denominator by root 11 minus root 7. So ये step हो गया. Now the numerator is in the form of a minus b whole square and the denominator is in the form of a plus b into a minus b. So this will become a square minus b square. This is the next step. So square of root 11, 11. 7. square of 7, 7. 7. right. Square of root 7. Square of root 11 is 11 or square of root 7 is 7. And this is in the form of a minus b whole square. So a square plus b square minus 2ab. So 11 plus 7 minus 2ab. So ये हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 77 हो जाएगा and the denominator will be 4. So numerator में बचेगा 18 minus 2 root 77 by 4. This step is clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we have to split. दोनों split करेंगे. So split करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 18 by 4 minus 2 by 4 root 77. ये step clear हो गया? Splitting समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ sir. Yes, So sir. what is the simplification of this? Simplest form. 18 by 4. 9 by 2. 9 by 2. 9 by 2. Correct. Very good. What is the simplification of 2 by 4? 1 by 1 by 1 by Right. 2. So next step we will write in simplest form. Now we have to equate this one. Root 11 minus root 7 upon root 11 plus root 7 is equals to, this is given. So we'll equate this with this one. So the value of A is 9 by 2 and the value of B is 1 by 2. If the sign are same, then plus 1 by 2. If the sign are different, suppose ये plus दिया हुआ, मान लो ये क्वेश्चन में plus दिया हुआ है. So B का वैल्यू क्या हो जाएगा? Minus half. 9 by 2. माइनस हाफ. बी का वैल्यू, आई एम आस्किंग बी का वैल्यू. ओके, अगर ये माइनस है, सेम साइन है दोनों का, ओके, अगर दोनों का साइन सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आ गया और ये माइनस है तो भी बी का वैल्यू नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस हाफ. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, because the sign are now same, so B is half. So hence A is equals to 9 by 2 and B is equals to 1 by 2. Right. Now let us move towards the next type of question, that is proof related question. So this is the proof related question. Show that this is equals to 5. So what we have to do, we have to rationalize each term. So सबसे पहले इसको rationalize करते हैं, right? एक एक करके हम लोग rationalize करेंगे. So what is the rationalizing factor of this 3 minus root 3 8? plus Plus root 8. root 8. Root 8. Okay. 3 तो plus first root वाला 8. हम लोग multiply कर दिए. Now second one. What is the rationalizing factor of root 8 minus root 7? Root 8 plus Root 8 root 7. plus root 7. Root 8 plus 7 multiply divide कर दिए. Second term हो गया. Now what is the rationalizing factor of root 7 minus root 6? Root 7 Root plus 7. root 6. 6. Root 7 plus root 6. So we will multiply and divide by root 7 plus root 6. So third term over. Now the fourth term. What is the rationalizing factor of this one? Root 6 plus Root root 6 5. plus root 5. Root 6 plus root 5. Right. So multiply divide कर दिए तो fourth term भी हो गया. Now fifth term. Root 5 minus Root 5 plus 2. Root 5 plus root 5 plus Root 2. 5 Right. plus 2. Root 5 plus 2. So multiply divide कर दिए. So हम लोग rationalizing, अब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सबको सिंप्लीफाई करेंगे. सो न्यूमरेटर इज वेरी इजी बिकॉज यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1. ओनली यू हैव टू सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर. सो ऑल द डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ a plus b into a minus b. सो दैट विल बिकम a square minus b square. तो ये हो जाएगा 3 square minus root 8 square. This will become, the second term will become the denominator. I am talking about only denominator. Root 8 square minus root 7 square, and the third term will become root 7 square minus root 6 square, and the fourth term will become root 6 square
minus root 5 whole square and the last term root 5 whole square minus 2 square. तो ये मिल गया denominator. So any doubt in this step? No, sir. No, Okay. sir. Now the denominator, the value of denominator, this will become 9 minus 8. ये हो जाएगा 8 minus 7. ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 7 minus 7 minus 6. Okay, this will 6 minus 5. and this will be 5 minus 2. 5 5 minus 4. minus 4. Okay. Now see, all the denominator are equals to 1. Are you observing? All the Yes, yes, denominator. sir. So I'm correct. I'm going to carry forward to next slide. See, the denominator of all the term is 1. So we can write directly the numerator. Any doubt in this step? No, sir. No, sir. Now जहां जहां पे माइनस साइन है वहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. Here only the sign will be affect. So how it will affect? See, due to this minus sign, this will become minus. Due to this minus sign, this will become minus. So open कर दिया ब्रैकेट. ये समझ में आ गया? ये वाला जो अफेक्टेड वाला जो साइन है मैं Yes, अंडरलाइन कर रहा हूं. Yes, sir. ओके. नाउ सी, ध्यान से देखो. रूट प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6. किसी का माइक ऑन है देखो. माइनस रूट 5 प्लस रूट 5. ये सारे कैंसिल हो गए. तो क्या बचा? 3 plus 2. 3 plus 2 equals to 5. Equals to Right. 5. 3 plus 2 Therefore, is LHS equals to equal 5. to RHS. यही निकालना, यही प्रूफ करना था. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन वेरी गुड क्वेश्चन. ध्यान से देखो. बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, है ना? छोटा है ना? छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है. छोटा है. ओके ओके. बड़ा है बट बहुत इजी है. कुछ नहीं करना है, एक एक टर्म को हम लोग को रैशनलाइज करना है. सो विल रैशनलाइज वन बाय वन. सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच टर्म ऑन LHS. You tell me what you will get if you rationalize this one. What is the rationalizing factor of 1 plus root 2? 1 minus minus 2. 1 minus root 2. So what you will get in denominators? 1 minus 2. 1 minus 2 One, मिलेगा. one, 1 minus 2 you will get. क्योंकि ये हो जाएगा 1 square minus root 2 whole square. So you will get 1 minus 2. Denominator. I am talking about denominator. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So first term you will get 1 minus root 2 upon 1 minus 2. What you will get the second term? 2 minus 2 3. minus 3. एक मिनट, मैं 2 minus 3. जिससे पूछूंगा वो बताएगा. विंध्या, what is the second term? What you will get second term? So root 2 minus root 3. Upon denominator also you have to say, na? Root 2 minus root 3 upon root 2 minus root 3. No. Neha, you correct it. sir, root 2 minus root 3 upon 2 minus 3. Very good. Root 2. सर मैं रैशनलाइजिंग वो बता रही थी सर. नहीं मैं फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ because we are writing अच्छा अच्छा तो फिर Okay, root 2 third, minus एक root 3 by Vindhya. 2 minus 3. विंध्या तुम थर्ड का बताओ. चलो, सेकंड का तो नेहा बता रही, थर्ड का बताओ. So Final root 3 minus root 4 upon 3 minus 4. Very good. Okay. Now Richa, you tell me the fourth one. Root 4 minus root 5 upon 4 minus 5. Very good. Root 5 minus root 5 upon 4 minus 5. Now और किसको पकड़े हैं? पवित्रा, फिफ्थ टर्म. Root 5 minus root 6 by 5 minus 6. Very good. Root 5 minus root 6 upon 5 minus 6. Ovesh Chaudhary, the sixth term. Sir, root 6 minus root 7 upon 6 minus 7. Very good. Root 6 minus root 7 upon 6 minus 7. Mihita, next one. The root 7 minus root 8 by 7 minus 8. Very good. Root 7 minus root 8 upon 7 minus 8. अब एक ही टर्म बच गया, किससे पूछे हैं? श्री कीर्ति, the last. Root 8 minus root 9 upon
8 minus 9. वेरी गुड. सो अभी सबका डिनोमिनेटर देखो कॉमन है ना, सेम है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू आर गेटिंग -1. तो जब -1 से इंटू करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर जो है, आई मीन टू से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर का साइन चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा. सो यू विल गेट -1 प्लस √2 द फर्स्ट टर्म, एंड द सेकेंड टर्म -√2 प्लस √3. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. Because Yes, the sir. denominator is -1, so first term you will get this one. Second term देखो ध्यान से, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस. दिस इज द फोर्थ टर्म. फिफ्थ टर्म -√5 प्लस √6, -√6 प्लस √7, -√7 प्लस √8, एंड द लास्ट वन इज -√8 प्लस √9. तो ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now see carefully. This 2 will be cancelled. Plus √3 minus √3. Plus √5 minus √5. Plus √5 minus √5. Plus √6 minus √6. Plus √7 minus √7. Plus √8 minus √8. क्या बचा? -1 plus Minus √9. 1 and √9. Right. 9. So what is √9? 3. 3. -1 plus 3. कितना होगा? 2. 2. So this 2. is the LHS. So क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बोले, कैसा है ये? इजी है? हाँ, sir. Okay. Easy, yes, sir. Now we are moving towards the last type of question, that is to find the value of expression. So this is the last type of question. दो क्वेश्चन करेंगे इसमें. The value of x is given 3 plus 2 √2, and we have to find the value of this expression, that is x square plus 1 upon x square. So first of all, what is given? X is equals to this. Now we are going to find the value of 1 upon x. 1 upon x हो जाएगा 1 upon 3 plus 2 √2. अब इसको हम लोग रैशनलाइजिंग करेंगे, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ. 3 minus 3 minus 2 √2. Right. 3 minus So we'll multiply divide by 3 minus 2 √2. अब न्यूमरेटर तो इजी हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करना है. And now we have to simplify the denominator. The denominator is in the form of a plus b into a minus b. So that will become a square minus b square. किसी का माइक ऑन है? देखो माइक ऑन है किसी का. So next step, this one 3 square 9 हो जाएगा. What is the square of 2 √2? 8. 8. Very good. So 3 minus 2 √2 upon 9 minus 8. 9 minus 8 is 1. 1. So हम लोग को केवल बचेगा 3 minus 2 √2. So this is the value of 1 upon x. Now we have to add these two, x plus 1 upon x. So जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? 3 plus 6. 3 That is plus 3 plus 3. 3. Yes, that is 6. Now squaring both sides will get, this will become 36, and the left side will be x plus 1 upon x whole square. Now we'll use a plus b whole square. So ये हो जाएगा a square plus b square plus 2ab. a square plus b square plus 2ab. और इसमें भी x और x cancel होगा. So finally what we will get? X square plus 1 upon x square plus 2 is equals to 36. Again shift plus 2 to this side. That will be -4. Final answer? 34. 34. Okay. 34. अभी इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. You can directly substitute x here, and you can directly substitute the value of 1 by x here. तो ये हो जाएगा 3 plus 2 √2 whole square plus 3 minus 2 √2 whole square. वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. So you have both options. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes. Now, Yes, sir. now the next question we are going to do is, if x is equals to √2 plus 1 upon √2 minus 1, and y is equals to √2 minus 1 upon √2 plus 1, find the value of x square plus y square plus xy. So what we are going to do, we are going to simplify x and y separately. So पहले x को simplify कर लेते हैं.
So in order to simplify, we have to rationalize the denominator. So what is the rationalizing factor of this Root one? 2 plus 1. Root 2 plus Root 1. 2 plus 1. So we will multiply, divide by root 2 plus 1. So this step is clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now root 2 plus 1 into root 2 plus 1 will be root 2 plus 1 whole square. And the denominator is in the form of a plus b into a minus b. So denominator a square minus b square हो जाएगा. And the numerator will be a square plus b square plus 2ab. So this will become 2 plus 1 plus 2 root 2 upon 2 minus 1. Any doubt in this step? No, sir. No, sir. What is the value of 2 minus 1? 1. 1. 1. केवल न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे. That is 3 plus 2 root 2. So this is the value of x. Now we are going to simplify y. So what is the rationalizing factor of root 2 plus 1? Root 2 minus 1. Right. Minus 1. Root 2 minus 1. So multiply, divide by root 2 minus 1. Again, this is in the form of a minus b whole square. So a square plus b square minus 2ab, and the denominator is in the form of a plus b into a minus b. Okay. So next step में हम लोग लिखेंगे a square plus b square minus 2ab upon a square minus b square का format में लिखेंगे. So this will become 2, this will become 1, and this will become 2 root 2, और ये हो जाएगा 2 minus 1. Okay. So 2 minus 1, 1 हो जाएगा again. So we will simplify numerator and we'll write the numerator. What is the numerator? 3 minus 2 Minus root 2. Right, 3 minus 2 root 2. Okay. अब यहाँ पर हम लोग के पास दो मेथड है. You can directly substitute the value of x and y in this expression, or you can use one more method, that is formula method. So this is the formula: x plus y square is x square is equals x square plus y square is plus xy can be written as x plus y whole square minus xy. देखो ये फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे. एक्सपैंड करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy minus xy. So what is the value of 2xy minus xy? x. xy 1. Yes, you will get this expression only. ओके. अब ऐसे करने से जल्दी आंसर आ जाएगा. देखो x और y का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर. सी केयरफुली, दिस 2 विल बी कैंसल. रूट 2 root 2 minus 2 root 2 will be cancelled, and we are getting only 6 square, and this is in the form of a plus b into a minus b. Okay. So next step में आ जाएगा 6 square minus a square minus b square के फॉर्मेट में आ गया. 3 square 9 हो जाएगा. What is the value of 2 root 2 whole square? 8. So 36 minus 9 minus 8. 9 minus 8 is 1. So what is the final answer? 35. Right. The final answer is 35. So this is the last question of today's session. Let us move towards the next section, assignment questions. This is the first category question, simple problem, simplification to find the value of a and b, proof related questions to find the value of expression. So ये 5 questions homework copy में करना है. You have to complete in homework copy and you have to send me the scan copy through WhatsApp. That's all for today's session. Thank you very much.